customers? With Minu Mart, I am been there from day one, where they have started, I think, many stores. After that, I'm connected with Minu Mart for a long period, where the fashion jewelry is there. Minu Mart has an exclusive collection. The quality is awesome. He's very trendy in whatever he's giving. It could be either the clothes line that he has started, because he has understood the need of a woman. I think it is everything that is sold under one roof. If a woman walks in, I'm sure she walks out with something. So the need that is there, it could be personal, or it could be family, or it could be emotional. Everything he has seen to it that it is arranged, in his store. So I'm so happy that it has been expanding, and we started with the jewelry lines earlier, and the fashion industry is always with him. He's always with the fashion industry. But now we've got a lot of things with Minu Mart coming up. So you two are associated with the fashion industry. You organize that Swaraj fashion shows. What would you say? What change has the fashion industry come through in the last 10 years, in the decade as such? Please define. As per what are you asking? Is it? As per the requirement of the customer, or the fashion? No, the demands are superb, because fashion sells when we do a lot of fashion shows. Once the fashion shows are lined up, and there's a good way of you can sell one stone in very different variety, but if you give a language to that particular stone, or give it a theme and a deliverance to the crowd, the demand in the market increase. It's how we will display a particular design that he has been designing. So the demand is, fashion never ends. It is every generation comes up with a new style and new style statement. We have great designers coming up. We have a lot fresh designers coming in and out. So we are not only looking at international. We always thought international was selling, but let me tell you today, international is not that selling, because they all copying Indian styles, Indian ethnic wear. There's a lot of mix and match, and we have a lot of international people coming to India. So something like Minu Mart and everything that is very stylish and very trendy, if people come in, there's a lot of I think a lot of tourist people can also visit Minu Mart, because they can see a lot of Indian stuff. And yes, this trend is increasing, and there is a lot of demand where fashion, jewelry, accessories, everything is there. In the last 3 years only, the mart have grown such big, nationally, internationally. What do you say? What has been the? Within 3.5 years, we have achieved around 40 showrooms now. This is our 40th showroom, and we are the only people we have started the jewelry available on rent. And we are the only people we have started the 20 years old, 18 years, whatever jewelry you are having very old, we will exchange with that. So that's Sudh Mumbai, Sudh Bharat, that concept also we have started. And what is the real challenge facing while you've grown up as a brand as such? Are there any competitors with you? No, we don't have any competitors. We are having something different concept, one-stop, lady stop. And not much actually. We don't have any competitors now, as of now. That's what we believe. And what was the real motivation to start this brand as such? We have been there since around 16, 18 years in gold industry, real gold and real diamond. And slowly the trends are going to change. So we started imitation jewelry and all that.
First, congratulations to him for amazing store over here, and it's like a Lokhandwala is the next fashion hub for the glamour television and film industry. So I think it's a right place to open the store, and the trends have changed quite a lot. जो fashion है revolution होते जा रहा है, history is coming back, like fashion history is coming repeating, but little contemporary touch to it. चाहे वो ज्वेलरी को ही ले लो, जो पहले की ज्वेलरी थी वही थोड़ा मॉडर्न टच लेकर अगेन एथनिक पीपल लाइक्स टू वेयर एथनिक ज्वेलरी, जैसे पोल्की है, कुंदन है, जड़ाव नेक है, लेकिन ट्रेडिशनल दे वांट टू वेयर इट. एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरीज है इट्स बिकम वेरी वेल लाइक अ स्टेटमेंट पीस फॉर देम, फॉर जस्ट बिग बिग शैंडलर इयरिंग्स, वो झुमके का लेकर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल डिजाइनर यूजिंग इट. सो फैशन एज अ ज्वेलरी स्पेशली इज चेंजिंग वेरी मच, एंड क्लोथिंग में भी काफ़ी चेंज आ रहा है एवोल्यूशन में. So when it comes to ladies fashion, as you know, they have a lot of requirement as such and lot of choices. So how it's 16 श्रृंगार बोलते हैं ना, अभी 16 श्रृंगार तो 16 लोग अलग अलग होगा, तो obviously they have more requirements, they have more choices, and then the market is full of them, so obviously they take time for that as well. So we have more varieties for them. it's about the imitation jewelry market, and how does the imitation jewelry really makes a woman choose that? Is it same as compared to the real gold or real In terms of imitation jewelry, a lot of new collections are coming according to movie, according to serial, new trends, according to dress. Real diamond, real gold is not that way. We have both the collections. We have real diamond, we have real gold, and imitation jewelry. Imitation jewelry, you need to have 1 lakh designs, where real gold and real diamond we need only 10,000-15,000 designs only. So everything is not possible for real stones and real concept and all that. So real imitation jewelry, you can make it everything. Everyday life to wear real one jewelry, they have to change every day, different they want to wear it every parties. So nowadays imitation jewelry is so close to the real कि if it doesn't know, people can't make out कि it's real है कि you never know the high grade A class people also wearing imitation ones. That kind of finishing also. So their finishes are coming up. So what finishing we are using and what plating and what polishing and all that is exactly like the real only. So diamond jewelry, polki jewelry, everything as good as real. So people don't want to spend a lot of 10 lakhs, 15 lakhs necklace. We are making it for 4,000, 3,000. And so being a woman brand new going in Mumbai as such, being a place in Bollywood television industry, are you looking for any celebrity, any woman celebrity to be part of the brand as such? Our jewelry itself celebrity. I don't think so. We are celebrating for that actually. This is our 40th showroom. So all over India we have 40 showrooms now, and we are making a lot of collections and everything. Everywhere we have friends like all celebrities are over here. So we don't need any particular celebrity to build our brand. Are you bringing any unique concept, any new concept to sell the product as such? Unique concept, we have started temple collections jewelry, and we make jewelry according to the concept. When As I told you, when we have a show, we give him a concept 1 month earlier. So he designs the entire jewelry as per the concept. So he's a real backbone to us, So and he does it, he designs it himself. So whatever we show is all unique or freshly made by him. So it's costume jewelry. People say like costume jewelry, not Yeah. imitation. You should say we should have costume jewelry. So imitation looks very this thing, but when you put costume jewelry, is always coordinated with the theme. The costume jewelry is very much in. Like people loves to wear and pick up quickly, and it's a fast selling also, rather than the real one. Real साल में 2 साल में. and out of India as well, New Zealand, Australia also we are planning. So it can be an international brand. That's the way we are planning. And on-stop ladies store. Everything is there. In outfit, and apparels, jewelry, lingeries, everything is there. Under Minu brand. बाद में बोले कि मैं आपके इसलिए मैं डर रहा था. आप आओ ना मुझे. हाँ आ गया. सिंगर है, इनको भी रखता बीच लीना जी क्या कहेंगे, मेनू मार्ट का नया स्टोर ओपनिंग है, आप कितनी फैशन कॉन्शियस हैं और किस तरह के ब्रांड्स और किस तरह की ज्वेलरी पसंद करती हैं पहनना? बेसिकली मैं तो इंडियन और राजस्थानी काइंड ऑफ ज्वेलरी बहुत पसंद करती हूँ. मुझे बहुत पसंद है जो राजस्थानी फैशंस, जो ओल्ड फैशंस है, जो बार बार रिन्यू होता रहता है, तो आई लाइक दैट. और अभी तक मैं अंदर गई नहीं हूँ, तो अभी तक देखा नहीं है मैंने कि कैसी ज्वेलरीज हैं और कैसी है, वो मैं देखकर ही बता पाऊँगी. पर मुझे जो लेटेस्ट फैशन है, Let us see the shop first, then take the bets. That will be better actually. Yeah, So she can give the feedback about our concept. एक बार देखेंगे तो फिर वर्कशॉप का आ जाएगा. जाए लड़कों को क्यों ना सजाया जाए. तो मैं अपने लिए बहुत कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं इतना कुछ डाल के आया हूँ, तो
लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, बट वो बोल रहे थे कि डेफिनेटली हमें अब बनाना पड़ेगा कि फाइनली हमें इंडिया में वैसे लड़के मिल चुके हैं जो गहनों को अपना सकते हैं। तो ये आई वांट टू कैरी, मुझे वो ज्वेलरीज डालनी है, मुझे भी। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ लड़के ही डालें वो सब कुछ। तुमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया यार अंदर, अभी आपने देखा तो मेरे ट्राई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं अंदर। इट्स वेरी बैड। नो इट्स नॉट बैड, इट्स माय, ये मुझे जन्म सिद्ध अधिकार है। And what's going on professional front? I mean, are you engaged in like some project as well? We are doing a web series of all biology recently, और उसका शूट अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। और और काफी he is also this web series is my I'm also there in that one web series all biology. His name is Stylish. So उसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल का तड़का लगने वाला है। आप कह सकते हैं कि फैशन 2 वहीं पर दिखेगी, जो कि पुणे में शूट होने वाली है, बहुत जल्द आप सबके सामने आएगी। एंड होप यू ऑलवेज लाइक इट, आई लव इट। What is the concept of that show? It's a web series based on style basically, कि फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, किस तरह के कास्टिंग काउचेज होते हैं, जो भी डिटेल अंदर से लेके ऊपर तक की बातें सारी हैं, जो रियलिटी है फैशन इंडस्ट्री की। अंदर से व्हाट इज अंदर की बात? आपसे ज़्यादा अंदर की बातें कौन जान सकता है? That's right. That will be a secret. So the shooting will start and should the viewers expect to telecast on the net as well? Let's see, that's for YouTube. That's for basically for all the Balaji app. So अब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई वेब सीरीज स्टाइल के ऊपर बनी है, बट इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज अगर मूवीज बन सकती हैं तो वेब सीरीज में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सब कुछ दिखाया जाता है, बिकॉज इट्स ऑन ऐप। अगर बिकॉज टीवी पे कई चीज़ें ऐसी होती है जो दिखा नहीं पाते हैं चैनल वाले, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि क्या दिखाया जाए ऑडियंस को, क्या ना दिखाया जाए, बट ऑल्ड बालाजी इज़ अ वेरी बोल्ड ऐप। सो ऑफ कोर्स हम लोग उसमें कुछ बोल्ड ही करने वाले हैं। सो लेट्स सी। हाँ, बोल्ड तो होगा ही। एंड इट्स अ नॉर्मली ऐप फॉर यंगस्टर्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल्ड आपको उसमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं। सो ऑब्वियसली यू गाइज विल लव इट। मेनू मार्ट के नए स्टोर में आपको? इस स्टोर में काफ़ी गुड फैशन ड्रेसेस है, पार्टी वेयर एंड वेरी गुड कलेक्शन ऑफ पर्स, हैंड बैग्स एंड ऑल, और ज्वेलरीज बहुत अच्छी है। जैसा मैंने सोचा नहीं था कि लाइक राजस्थानी एंड यू नो टिपिकल जो होती है वो मिलेगी, बट यहाँ पर सारा कलेक्शंस है, बहुत अच्छा है। डायमंड्स में भी है कुछ, मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है? अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, आगे क्या कर रही हैं बताइए? अभी मेरी हसीना रिलीज़ हुई थी, गिरगिट हुई थी, अब रिलीज़ होने वाली है, ऊपर वाला देगा छप्पर फाड़ के। एंड वन मोर मूवीज, अभी नाउ आई कांट क्लोज द नेम, धर्मेंद्र जी के साथ में मेरी एक बड़ी पिक्चर आने वाली है एंड वरुण धवन के साथ आने वाली है। यू नो राखी सावंत स्टेटमेंट ऑलवेज मेक अ न्यूज़, तो क्या कहना चाहिए कि हाल ही में इंस्टाग्राम पे आपके और सर के बारे में डाला है कि बिग बॉस 12 के पार्ट बनने वाले हैं, क्या कहना है, कितने एक्साइटेड हैं, कितनी खुश हैं इस बात को लेकर? ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी, बट इट्स वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज अभी कुछ भी रिवील ना ही हो तो बेटर है। बट अगर राखी जी ने वो वीडियो डाला है हम दोनों का, दैट बिकॉज सी राखी जी इज इंस्टाग्राम रिलेटेड टू यू नो पार्टिसिपेटिंग इन बिग बॉस 12 एज सच, हाउ एक्साइटेड यू आर फीलिंग एंड व्हाट यू शेयर अबाउट द कमेंट? सी एज अभी क्या है कि पूरी इंडस्ट्री को पता लग चुका है कि राखी जी और हमारी जो दोस्ती का जो दोस्ताना है वो बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है। बट अगर उन्होंने डाला है बिग बॉस 12 के लिए, बिकॉज बिग बॉस 12 इज़ ऑल अबाउट जोड़ीज दिस टाइम, सो जोड़ीज में आ रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि हमसे हॉट कोई जोड़ी मिलने वाली है अभी बिग बॉस 12 में। बिग बॉस सलमान जी को बोल दिया, राखी जी ने ओपनली सरेआम ऐलान कर दिया है कि मेरी जो स्वीट हार्ट जोड़ी है ईशान एंड प्रीति, they both are coming in Big Boss 12, but it's for us it's very early to talk about that, so it's a top secret कह सकते हैं अभी तक, because अभी मैं नहीं चाहता मैं कुछ भी रिवील करूं। अभी टॉप सीक्रेट बचा नहीं, क्योंकि राखी जी ने अगर बोल दिया है और इंस्टा पे अगर आ गया तो पूरी इंडस्ट्री को सब पता चल चुका है। Exactly. और ऑलमोस्ट हाफ इंडस्ट्री वो वीडियो, आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री वो वीडियो देख भी चुका है। So what do you feel if you are part of Big Boss 12 as such, कितना टर्निंग पॉइंट है आपके करियर के लिए? Of course, see, बिग बॉस जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है शो है, बिकॉज उस पर कोई भी आता है
तो उसके करियर के लिए वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, चाहे वो अर्शी जी हों, चाहे अभी शिल्पा शिंदे जी हों। जैसे शिल्पा शिंदे जी को पहले काम मिलना, जो एक न्यूज़ आ रही थी कि काम मिलना बंद हो गया है, बट नाउ सी आफ्टर बिग बॉस वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो ऑफकोर्स जैसे कि एज अ इस बार जो उनका कॉन्सेप्ट है जोड़ी, और मुझे नहीं लगता कि जोड़ी में हमसे ज़्यादा स्टाइलिश बेटर कोई स्टाइलिश फैशनेबल एंड कंट्रोवर्शियल जोड़ी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, थैंक यू। Very early to talk about that, so we can't reveal it properly now. But हाँ, मीडिया को बहुत जल्दी पता लग ही जाएगा जब वो चीज़ होगी। हमसे पहले आप सबको पता चल जाता है। देखो, हम लोगों को खबरें मिलती हैं आप लोगों से, और आप लोगों से ही हमें सब कुछ जानने को मिलता है, इसलिए मीडिया। थैंक यू। It's like I'm very much feeling honored to be here. Meenu Mart is first ISO certified for artificial jewelry. So it's very awesome. अगर आपको कहीं जाना है बहुत जल्दी में और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मीनू मार्ट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आएगी। ज्वेलरी के साथ साथ इनके पास कॉटन फैब्रिक के, जैसे आप गर्मियाँ हैं तो कॉटन फैब्रिक के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं इनके पास। डू कम। And besides it, what is the specialty you find? What is the USP you find in the brand as such? क्या अलग आपको नजर आता है इस ब्रांड में कि फ्रेश स्टॉक, फ्रेश कलेक्शन, जो इनके डिज़ाइंस हैं, कुर्ती के डिज़ाइंस, ज्वेलरी के डिज़ाइंस फ्रेश हैं, नए अलग तरीके के। About your professional, are you engaged in some projects as well? Yeah. I'm doing Gigi Mount Star Bharat. Recently I did Akbar and Colors पे Detective Dev second season आ रहा है, तो hope। Good name please. Hi. Hello everyone, this is Richa. I'm from Punjab, so I'm here at Meenu Mart for the opening. Thank you. Okay. Yeah. Hi, this is Richa Tiwari. I'm from Punjab and I'm here in Meenu Mart for the openings. Thank you. Thanks, Richa. I love this brand because I've been associated the last 3 years with them, and I have also basically been a kind of person who's showcases jewelry to all my clients also, because I've also been in the real market, in the real jewelry market. But then thanks to him, I've also got into the fine jewelry, and I love Meenu Jewels because I think they just offer everything on the platter. So I think it's convenient for any customer to come over and just get anything what they want. So whoever is watching this show, please ensure that you come to Meenu Mart, because for whatever you need will be available here at your doorstep. So What's the particular USP you find in the brand as such? What is it so different, so unique? I think it caters to every segment of society. It's not necessary that, usually you see that people are only either too expensive or they're too low in their price factor. I think what I like about Meenu Jewels is because that they have got catered to all sects of society. So a person like me can also just come and pick up something. Somebody who would hesitate otherwise to come to a brand store will also come and find something for them. And then besides that, I think the most beautiful thing is that I think I have never heard anybody, like giving that return, take your old jewelry and take a new one. This happens in the real market, but definitely not in the artificial world. So he has made it very easy. You got jewelry on rent. You have, and he, I think, caters, sponsors most of the shows. So I think he is just all over. And what's going on in professional front? What are you engaged in the future? What are you doing with the
special things? Well, I think if I'd like the fact I'm associated with Meenu. I think we like to take in places. We like to introduce a men's line. We like to even do the kids. We got people who have come up to us for doing some kids jewelry, so we can have something on show which nobody does. So this is like another new segment where we can actually tap, because that's not been really looked into. So we have collaborators with us who are very interested. So we look forward to see how it really moves forward. So many people came to you to praise the brand. What do you have to say about how confident you feel right now? We are so excited that we are at the same place with the fashion industry's heart of place, and the serial people are there, and all this film industry people are there. So we are going to rock now. Action. I think this man is a daredevil. I think whoever backs him will always benefit. So whoever are there, please ensure that you connect with him, because he really is the future of India in the real sense of the word. Thank you so much. Thank you so much.